अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शनल एरियाज के बारे में। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन बाय द न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन्स एंड द एक्सपेरिमेंटल यूज ऑफ द positron emissions tomography have shown that the cortex can be divided into three functional areas. The cortex of vermis influence the movements of the long axis of body, namely the neck, the shoulder, the thorax, the abdomen and hips. Immediately lateral to vermis is a so-called intermediate zone of hemisphere. This area has been shown to control the muscle of the distal parts of limb, especially the hands and feet. Lateral zone appears to be concerned with planning of sequential movements of entire body and is involved in the conscious assessment of movement errors. Intracerebral nuclei, the four masses of the gray matter, are embedded in that end of each side of the midline. From lateral to medial, these nuclei are dentate, umbiliform, globose, and fastigial. Fastigial. First one is dentate, second one is umbiliform, third is globose, and last is fastigial. The dentate nucleus is largest of the cerebellar nuclei. It has the shape of the crumpled bag with opening facing medially. The inferior of the bag is filled and made up of afferent fibers that leave the nucleus through the opening to form large part of superior peduncles. The umbiliform nucleus. The umbiliform nucleus is ovoid and is situated medial to the dentate nucleus, partially covering its hilus. Then, globose nucleus. Globose nucleus consists of one or more rounded cell groups that lie medial to the umbiliform nucleus. अब जो ग्लोबेस न्यूक्लियस होता है उसमें एक या इससे ज़्यादा राउंडेड सेल ग्रुप होते हैं जो मीडियल होते हैं एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस के। अब जो आखिरी है वो है फेस्टिगियल न्यूक्लियस। द फेस्टिगियल न्यूक्लियस lies near the midline in the vermis and close to the roof. It is larger than the globose nucleus. अब चार हमने पढ़े हैं। जो एम्बोलिफॉर्म है वो अवॉइड है और सिचुएटेड है मीडियली और मीडियल है डेंटेट न्यूक्लियस के। अब जो है हमारे पास ग्लोबोस, जो ग्लोबोस है वो ज़्यादा राउंडेड है और इसमें एम्बोलिफॉर्म के मीडियल है। एम्बोलिफॉर्म डेंटेट के मीडियल है, ग्लोबोस एम्बोलिफॉर्म के मीडियल है और हमारे पास जो फेस्टिगियल है वो नियर द मिड लाइन ऑफ द वर्मिस है। और उसके बाद द इंट्रासेलुलर न्यूक्लियाई आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज मल्टीपोलर न्यूरॉन विद स्मॉल ब्रांचिंग्स and from the cerebral outflow in the superior and the inferior portions. यहाँ तक इस पोर्शन में, इस टॉपिक में जो भी आपका सवाल है आपने ज़रूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।